जब कोई साहिब कमाल गुज़र जाता है, हमसे जुदा होता है, तो हम सारी दुनिया वाले उसका गम भी करते हैं कि दुख भी होता है, अफसोस भी होता है और लोगों को एहसास महरूमी भी होता है कि ये शख्स हमसे रुखसत हो गया, इसमें ये खूबियाँ थीं, पता नहीं अब आइंदा कोई ऐसा शख्स आए या ना आए. A great servant of the Ahmadi Muslim community passed away on Wednesday. Sahibzada Mirza Khursheed Ahmad was the son of Hazrat Mirza Aziz Ahmad, a grandson and companion of the promised Messiah Islam. He devoted his life to Islam for more than 60 years, demonstrating exemplary obedience from the very start. He started his career as Waqf in 1956 as a lecturer of English in Talim Islam College and taught there for more than a decade. But in early 1970s, the educational institutes of Pakistan were nationalized by the government of Pakistan. When the government nationalized the college, he requested the Hazur, the Khalifatul Salis Rahimullah, that I am devotee and Waqf Zindagi, so I am here, please give me direction and appoint me, take some Jamaati work from me. The Hazur ordered that please to continue its teaching in college. When he received first salary from the government, he again went to Hazur that I am the Waqf Zindagi and government gave me this salary. The Hazur said they will return the salary and come in offices of Southern Ahmadiyya, Pakistan. The state-sponsored persecution of the Ahmadiyya Muslim community proved to be a recurring challenge in Sahibzada Mirza Khursheed Ahmad's life, beginning with the anti-Ahmadiyya riots of 1974. One evening during this period of trial, he received a very special visitor. The present Hazrat Khalifatul Masih, he came to our house and he said that his father, that is Sahibzada Mirza Mansur Ahmad Sahib, Nazir Allah at that time, he had asked myself and my younger brother, Mirza Ghulam Ahmad, to come to him. Both of us went there and went to him, and he told us that Khalifatul Masih Salis had asked you to report to him at Qasr Khilafat. Both of us went there. And for many months, though our house was just 10 minutes walk away from that office, they used to reside in Qasr Khilafat day and night along with Hazrat Khalifatul Masih Salis, and also traveled along with him to Islamabad when he went there for the proceedings of the Special Committee of the National Assembly. So in those crisis days, he had to remain there along with Hazrat Khalifatul Masih Salis. It was after 1-2 months that Hazur allowed them to, at least for one day a week, to sleep at their home or to go to their home. We used to go there and meet him for a short while, and he used to remain there. So I think that was a very critical juncture of his life and service for Jamaat-e-Ahmadiyya. The persecution in Pakistan continued through the decades, reaching a particular climax on 20th May 2010, when attacks on mosques in Lahore led to the martyrdom of 86 Ahmadis. On this occasion, Sahibzada Mirza Khursheed Ahmad, now Nazir Allah of Pakistan, delivered an emotional defense of the Islamic principles the Ahmadiyya Muslim community follows. हमारा रद्द-ए-अमल जो कुरान करीम की तालीम है एक मुसलमान के लिए कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे, जब कोई तकलीफ़ पहुँचे, तो तुम पहला रिएक्शन, पहला रद्द-ए-अमल तुम्हारा है इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. हम अल्लाह, ये हमारा पहला रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है कि अल्लाह ताला ही के हम हैं और अल्लाह ताला की ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं. इसी तरह कुरान मजीद की तालीम एक मुसलमान को है कि मसाइब और शदायद और तकालीफ़ और दुखों के वक्त इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम अपने न किसी बंदे से
न किसी हुकूमत से, न किसी सोसाइटी से, बल्कि अपने रब्बे करीम से मदद तलब करो सब्र के साथ, और उसके हुजूर गिड़गिड़ाते हुए, उसके हुजूर सजदा रेज़ होते हुए, उसके हुजूर अपनी इबादतें पेश करते हुए. Even at the very end of his life, battling ill health, Sahibzada Mirza Khursheed Ahmad continued to serve. Just last month, his photo appeared in the New York Times alongside an interview about the Ahmadiyya Muslim community. He worked under 4 Khalifas and will be remembered for having loved them all. खिलाफत से जो ताल्लुक़ और मोहब्बत थी, उसका इजहार आपने एक दफ़ा मेरी अहलिया के सामने इस तरह किया कि जब मेरी अहलिया ने उन्हें कहा कि खलीफा वक्त के लिए तो आप दुआएं करते होंगे, मेरे लिए और बच्चों के लिए भी दुआ करें, तो कहने लगे कि खलीफा वक्त के लिए मखसूस सजदों में मैं उनके बीवी बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ. और उस वक्त उनकी जब ये कह रहे थे तो बड़ी जज्बाती कैफियत थी. खलीफा मसीह सालिस के सबसे बड़े बेटे हैं सैयद मिर्ज़ा साहब, कहते हैं कि भाई खुर्शीद तमाम उम्र खिलाफत के कदमों में बैठकर आखिरी वक्त तक सिलसिला की खिदमत करते रहे. अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और बेशुमार फजलों और रहमतों के साए में रखे. उन्होंने तो अपना हक पूरा कर दिया. बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, यकीनन उन्होंने अपना हक पूरा कर दिया. अल्लाह ताला हम सब को भी अपने हक पूरे करने और निभाने की तौफीक अता फरमाए.